So I'll give you one example why I'm telling you all these things very specifically, because there was a survey done, and within that survey, uh, there were like people, similar kind of people who were gathered for one particular event. And what it does, for just a survey kind of thing, at one floor, they provide some sample drinks, and the same drink, it was a sample drink, so you may consider it as a soft drink, and it was given free of cost to everyone. And the same drink, to the next level, means second floor pe, they were given, but there was a price along with that particular drink. Samples, there was a sample only, but still they apply few small amount of price along with that, and people were paying and taking that juice or drink, and then other floor, it was getting free of cost. So then once they were taken the review of that particular drink, so those people who were paid for that particular drink, they were given very nice reviews. Oh, it was wonderful. The taste was awesome. I feel refreshed. It was like wonderful experience for all of them. Maximum everyone give positive response, and it was a wonderful feedback given by everyone who paid for that. And at the same level, even similar kind of audience, the same drink was served free of cost. There people were given reviews like ha acha tha, nahi acha tha, it was ha so so, and that kind of not even satisfied, that kind of reviews people were giving. Exactly same, nothing was changed. Even the packaging, even the glasses used, everything, drink तो सेम ही था, but how the people were serving and everything was same. मतलब service में भी कोई change नहीं था, but still those who get it free of cost, they didn't value it. Rather, those who were paying for it, they valued it and they were given good feedback. Now just imagine the same thing with this. If I'm charging very high, it may happen that people may do a lot of efforts, and because they are paying, they may get the breakthroughs also, and they may work on their personalities, and they may get good results out of it also. But it should not happen, as the same thing is getting free of cost without paying hefty amount of that particular training. If you are doing it free, it should not happen that you are not taking efforts out of it, or it should not happen that you are not working on it. So my humble request to all of you, that though you are getting it free of cost, please take the advantage of it. Whatever tips, whatever hikes we are giving to you, try to implement and try to just take only one thing out of it. Everything is not possible, doing everything and multitasking and all is not possible, but take one thing at a time and just work on it and try to implement it, and let's see the result. So even though if you'll work on one single thing, I hope you will get good results. So I hope it's clear to all of you, and I want promise from all of you. Give thumbs up and say yes onto chat box कि आप सभी अपने ऊपर काम करेंगे, एंड सभी को अपने पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करना है. तो शो मी सम एनर्जी. थम्स अप. यस यस यस, फटाफट आना चाहिए, बस यही केस में हम आया है यहाँ से. तो चैट में डालो यस यस, थम्स अप. अरे एनर्जी नहीं है, आगे नहीं बढ़ूंगी मैं, एनर्जी नहीं दिखाओगी तो. यस. ओके, तो थोड़ा बहुत तो है एनर्जी. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन देन. I'll share my PPT with all of you. Please confirm if you could see the PPT. You all can see my PPT. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we were gone through this, and two slides हमने tips के ऊपर जो है वो already discuss कर लिए थे, right? So now let me take these people in. Now we will move ahead with the next PPT. Don'ts. टिप्स के एक, दो, तीन, तीन है, तो हमने दो देखे थे शायद. हाँ मैम, दूसरा वाला भी थोड़ा फास्ट फास्ट हो गया था एंड में. थर्ड वाला नहीं देखा हमने. थर्ड नहीं देखा है, राइट. तो ये वाला टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये जो है इसके हाँ. सारे
हाँ, लास्ट वाला थोड़ा ऑडियो बुक्स वाला रह गया था ना। हाँ हम्म। जी जी। ओके, तो यहाँ से करते हैं फिर हम, और जो नहीं थे उनके लिए एक बार रिपीट कर देते हैं। तो टिप्स टू इम्प्रूव फर्स्ट वाला जो स्लाइड है, जस्ट आई जस्ट रीड आउट दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, सो एंड इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू यू, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि क्या करना है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन skills. So first is, you can't learn English from book like driving a car. So we will discuss on few things, few skills which require proper kind of practice. Without practice we couldn't do it. In the similar way, language is a skill, so you have to use it. Until unless you'll not use it, you can actually, you may read a lot of books, you may hear so many things, but if you'll not speak, if you'll not use, you can't actually learn it. So you have to speak, that is, you have to use that particular language, then and then only you can improvise it. Otherwise there is no another way, you have to use it. द सेकेंड थिंग इज द मोस्ट नेचुरल वे टू लर्न ग्रामर इज थ्रू टॉकिंग. तो बात कर करके, चाहे वो उसमें मिस्टेक्स हो, लेकिन आप बोलो. जब आप बोलोगे एंड इफ यू फील लाइक ओ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, द सेंटेंस इज नॉट properly, maybe whatever construction is there, that is not proper, or feeling like something is wrong, so that's how you may improvise it. But if you will not speak, then you will not realize also, and that's how you could not work on it. So first try to implement it, and then later on you may work on your mistakes, but start somewhere. Then keep an English diary or journal and start by writing a few sentences a day, and then get into the habit of writing more. So I was suggested you all that, okay, at the end of day, keep one diary wherein you can just write down what all things you have done throughout the day, and write it in English, and then you keep on writing things. And then I was told you regarding thinking in English. So even though when we speak in front of other people, we may get embarrassed sometime, if what all, what will happen if it is wrong, और लोग क्या कहेंगे वाला भी बोला था, एल के लोग क्या कहेंगे, जिससे भी बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट स्पीक, or rather they don't want to make themselves as a kind of जैसे कहते हैं ना कि हमारा खुद का ही हमने लोगों के सामने बना लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड वो सोच के या फिर उस फियर के वजह से बहुत सारे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते. बट जस्ट कीप दोज थिंग्स असाइड एंड स्टार्ट speaking in English. And then most of the time, if at all, if you feel कि okay बात करने से problem है, तो start thinking in English, and that's how also you can improvise your English. Then चिल्ड्रंस बुक, हाँ, आपको चिल्ड्रंस की बुक यूज करने हैं इनिशियली जब आप काम कर रहे हो. अगर आपका, बिकॉज एवरी वन विल हैव एट अ डिफरेंट लेवल, एज पर योर लेवल यू मे चूज. अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, बहुत स्टार्टिंग फेज में हो, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते हो, तो आपको फिर चिल्ड्रन की बुक से यूज करना है. अगर आपको लगता है कि यस यू कैन स्पीक गुड अमाउंट ऑफ इंग्लिश, बट स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इट, then you can go for a different kind of books available in the market. But read English books, then listen a lot of English shows and news and all this kind of things, so that whatever intake you are taking, no, so that you have to enhance, and then only you can improvise your English. So आप अगर beginners level पे हो, तो beginners level पे आप बच्चों के बुक से start कर सकते हो. And what you have to do is now, from today itself, we will have certain kind of conversational session. So maybe ये slide खत्म होने के बाद we will have one small demonstration, and I'll give you a few of the क्या बोलते हैं, different different kind of conversations, or different kind of क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल का है, होटल का है. नाउ वॉट एवर थिंग्स यू रिक्वायर, टॉपिक। वेर यू वुड लाइक टू, यस, कुछ किसी ने कुछ सॉरी कहा. मैम। हाँ. सो जिस टाइप का कॉन्वर्जेशन हमें लगता है, तो उस टाइप का मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, एंड उस सिचुएशन पे फिर दोनों को हम बात करने के लिए बोलेंगे. तो एक रोल प्ले टाइप का हम एक्टिविटी आज करने वाले हैं. तो लेट्स फर्स्ट फिनिश विद द टिप्स, एंड देन वी विल हैव रोल प्ले. तो अब आप तब तक वो सोच लो कि आपको कहाँ कहाँ पे इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ती है. जैसे स्कूल में आप जब टीचर से बात करते हो, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यूल नीड इंग्लिश. प्रिंसिपल से बात करते हो, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यूल नीड टू स्पीक इन इंग्लिश. और when you are going out in the market, and you would like to have certain kind of conversation with people, with certain kind of people, at that moment of time you require
to speak in English. So where exactly you require to speak in English, so what will happen? According to that, we will have a situation, and then on the basis of that situation, we will have a conversation. So this kind of role play we will be doing once we'll finish this 2-3 slides. Okay, so we are moving ahead. We have done with this particular slide. Now next tips wala slide. Keep a notebook of new words you learn and use them in sentence and try to say them at least 3 times when you speak. तो वाक्यत उपयोग जो मराठी में हम करते हैं, तो एक वर्ड लेना है, उसके साथ एटलीस्ट 3 सेंटेंस बनाने हैं, तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एंड देन फिट दैट इन द माइंड कि ओके this thing I have to remember as and when require this kind of conversation, I'll use this particular word. And that's how create certain kind of sentences. Use English whenever you can. It's simple as that. So whenever you get opportunity, whenever you get chance, just start speaking in English. Then the next point is nobody likes to hear their own voice. हाँ, बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज क्यों सुननी है? अभी तो मैंने बात किया, तो अभी तो मैंने सुना ना, बट सुनना और बोलना ये दो अलग अलग चीजें हैं। और जब हम एक टाइम पे करते हैं तो फोकस दोनों पे नहीं होता है। तो जब हम सुनते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिस्टेक हुआ। जब हम बात करते हैं तो ज्यादा ध्यान हमारा फोकस जो है वो बात करने पे है। तो इसलिए क्या करो कि मतलब जैसे अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो इट्स इन फ्लो, but if I listen to my own voice, then I'll understand ki wherever the problem was, wherever the improvisation was required. So in that way, what you have to do is now, for example, you are preparing for certain kind of presentation, you are preparing for certain kind of seminar or any kind of speech you would like to deliver. Now 15th August है, तो हो सकता है आपके स्कूल में आपको स्पीच देना है, कुछ करना है, तो अभी आपको प्रिपरेशन करना है। एंड नाउ हाउ यू विल डू द प्रिपरेशन? सो बेसिकली फर्स्ट टाइम आप क्या करो, एक ड्राफ्ट बना लो। जो स्क्रिप्ट आपको बनानी है तो उसका पहले तो एक ड्राफ्ट बना लो। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एआई टूल्स है, जहां से आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। तो don't spend much of the time on to developing your own script. You may take the reference from the Google or chat gpt or certain kind of different apps and applications, and then once you have the script, you just first read out the script and record that voice, record your own voice ki how it is going. Now, okay, the script is all fine and you have just read it. Now, it was just a reading, it was not a speaking, right? But even in reading, also, now if it's a speech or you are doing hosting or anchoring, and script will be in front of your eyes, then there is no problem. You have to just work on your reading skills. So that's how you can improvise it in the first go. Just first record it, then listen it. Now when you are listening at that moment of time, what happens is whatever message you would like to deliver, the similar kind of tonality must be there, similar kind of body language should be there, because the same word spoken into different way actually will give different kind of meaning to the audience. जो चीज मैं बोल रही हूँ उसी को अगर मैंने अलग तरीके से कहा तो उसका मीनिंग बदलता है। तो हम उस चीज को किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन हाउ आई एम सेइंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई एम सेइंग। सो for that particular thing ki what exactly message I would like to deliver to the audience, whether it is going with the similar kind of tone, intonation, with the similar kind of tone, with the similar kind of voice modulation, that also you need to check. So what you have to do is in the first listening round, you have to just go through it and find out the places. Just listen, do nothing at that moment of time. You just have to find out. Now whenever that voice goes, no, whatever kind of things will be there, minute second, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, तो उसको नोट डाउन करो, उस पॉइंट्स को नोट डाउन करो कि here I can improvise like this, here I can improvise like this. So point 1 2 3, तो area of improvisation. Now go like that, here 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 here, समझो 5 जगह पे है जहां पे काम करने की जरूरत है। तो now what exactly how you are going to replace those 5 places, then work on it.
okay, this is how I will say this, or this word is not good, I will use this particular word. This sentence is not looking good, I will change this, like whatever. So you have done the changes. Now this 5 places you would like to replace with whatever changes you have done. So now you will record your voice in the second round, wherein you will again go through everything and check with the things ki whatever things were there corrected or not. So again, listen it for the second round. And if required, there is a you still feel there is a scope of improvement and you can still improvise. So you may go for the third round also. And in this way, you have to record your voice, listen to it. But the only thing is, technique is what? Listen के टाइम पे सिर्फ listen करना है. It should be like by closing your eyes, you're just listening and earphone से ही सुनना है उसको. इस पे स्पीकर पे नहीं सुनना है उसको, ईयरफोन लगा के ही सुनना है. एंड दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि हाउ इट्स गोइंग. तो ईयरफोन से सुनोगे तो बाहर का डिस्टरबेंस नहीं आएगा एंड आपको क्लैरिटी से वो वॉइस आएगा. तो उसकी वजह से जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स है ना, मतलब छोटी छोटी चीजें जहाँ पे हमने कहीं पे कॉमा है वहां पे हमने पॉज नहीं लिया, कहीं पे फुल स्टॉप है वहां पे हमने लॉन्ग पॉज नहीं लिया, तो ये जो सारी चीजें हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो इज इट क्लियर कि वॉइस रिकॉर्डिंग करना है मतलब एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके. ओके. तो प्रेजेंटेशन के लिए या फिर कहीं स्पीच के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड. इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव. Now moving on to the next slide, that is listen English songs, get their lyrics, try to find the meaning, then repeat the same thing daily. अब एक्चुअली जो हम सॉन्ग सुनते हैं ना उसका हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. मोस्टली क्या होता है, गाने हम गुनगुनाते रहते हैं एंड हमें नहीं पता होता है दैट्स पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये सारा जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है. तो ये जो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मतलब जहाँ पे सबकॉन्शियसली हम चीजों को किस तरह से लेते हैं. तो बेसिकली जो चीजें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, और गानों का तो बहुत इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसे हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं एंड एक्चुअली इनडायरेक्टली हम सबकॉन्शियस को वो मैसेज देते हैं कि आई वॉन्ट दिस बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता हम कौन सा गाना गा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं. अब ये गाना हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, एक्चुअली हम हंस रहे हैं लेकिन गाना हम गा रहे हैं, रो रहा हूं मैं. तो सबकॉन्शियस बोलेगा अच्छा मेरे आका को तो रोना है, मतलब मुझे अभी स्टेट चेंज करना पड़ेगा या फिर ऐसी सिचुएशन लानी पड़ेगी जिससे आका रो जाए. मतलब उनको रोना है ना बिकॉज शी वॉन्ट्स टू क्राई. एंड दैट्स हाउ द सिचुएशन विल कम कि जिसकी वजह से सचमुच आंसू निकलेंगे. द थिंग इज इट्स वेरी वेरी डीप एक्चुअली. ये अभी मतलब 2-4 मिनट में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती बट इट्स वेरी वेरी डीप. सो songs are having a very deep impact on your mind, so please choose your songs very very carefully. Even choose your books very very carefully, choose your shows very very carefully, what you are watching, what you are reading, with whom you are hanging over, which kind of people you are giving more attention in your thoughts and in your real life. Everything is very, very important. Because your aura depends on all these kind of things. So yes, now coming to this particular point, कि सॉन्ग. तो जैसे आपको अभी इंग्लिश पे काम करना है तो सबसे इजी क्या है कि गाना गाने के थ्रू हम इजीली उसको सीख सकते हैं. तो जाने दो, गाने हमको समझते नहीं तो नहीं सुनेंगे. नर्सरी राइम्स तो बोल सकते हैं ना. हम तो कितनी बार प्रेजेंटेशन लेते हैं अपने, तो कॉन्टेस्ट भी है. तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्टार्ट सिंगिंग नर्सरी राइम्स. इजी है, कर सकते हैं, समझने में भी आसान है, बच्चों को पढ़ाने में भी काम आएंगे. तो नर्सरी राइम्स अगर हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या फिर उसको गुनगुनाते हैं तो व्हाट विल हैपन, उसमें जो भी पढ़ाया है या फिर जो इमोशंस है वो तो आपको आ ही जाएगा समझ में. बट बिकॉज ऑफ दैट एटलीस्ट एक इसमें वोकैबलरी में कुछ तो वर्ड्स ऐड हो जाएंगे एंड that is how you can improvise your vocabulary. So
यू कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। लिसनिंग में भी आपको थोड़ा सा इंग्लिश बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जिनके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं तो चला दो ना, नर्सरी राइम्स चला दो, बच्चों के सॉन्ग, इंग्लिश वाले सॉन्ग्स चला दो, उनके कुछ एजुकेशनल सॉन्ग्स या एजुकेशनल ऐप होगा उसमें कुछ नर्सरी राइम्स होंगे वो चला दो। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन बैकग्राउंड, अगेन you are working on to your communication skills. So that is how you can improvise. Then listen Ma'am, to English speaking shows. Yes. ma'am, sometimes there are some songs which do not make any sense. So in that case, what to do? नहीं है सेंस तो मत सुनो ना। सेंसलेस सॉन्ग सुनने क्यों है? अगर आपको लगता है कि उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है तो जस्ट लीव इट। वी हैव टू चूज, मैंने बोला ना आपको, यू हैव टू चूज इट वेरी केयरफुली। कि सॉन्ग का सेंस नहीं बनता है तो दैट्स नॉट अ फॉल्ट, बट वेन एवर यू फील कि ओके ये सेंसलेस है, ये मुझे नहीं सुनना है, तो डोंट यूज दैट। देर आर फ्यू songs and nursery rhymes which you can actually listen, and you can learn many things out of that. So choose that kind of thing. Fine. Okay. So, like there are nursery rhymes wherein you can have certain kind of actions. Now, for example, clap your hands, stamp your feet. So, at least action hai. And you know, these are the action songs. So, I will learn some kind of actions with this. Wheels on the bus go. So, within that also there are several kind of emotions and actions. Several kind of things. So these kind of songs or this kind of rhymes you can choose, wherein certain kind of things also, sensible things are also there, and by rhythm also it is very good, music is also good, so that you should be pleasant. नहीं तो फिर सिर्फ सीखना है डिफिकल्ट वाला, बोरिंग वाला अगर लोगे तो देन also you will not like it. तो जो आपको अच्छा लगे उसको चूज करो। देन द नेक्स्ट इज लिसन टू इंग्लिश स्पीकिंग शोज। अब बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं जिसमें इंग्लिश में पूरा कॉन्वर्जेशन होता है एंड इंग्लिश में पूरा बात करते हैं। तो उस टाइप के शोज आप देख सकते हो, एंड उस टाइप की जो भी कॉन्वर्जेशन चलती है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। जस्ट अ मिनट है, मैं चार्जिंग लगा देती हूँ। वैसे 5 मिनट बाकी है। और लास्ट वाला है लिसन टू ऑडियो बुक्स ऑफ इंग्लिश और न्यूज एंड वॉच इंग्लिश मूवीज। तो ये डिपेंड करता है अगेन आपको जो मूवीज अच्छे लगते हैं वो मूवीज, या फिर आप चूज करो कि कौन से मूवीज देखने चाहिए। अभी समझो अगर आपके घर में बच्चे हैं एंड यू वुड लाइक टू वॉच सर्टन काइंड ऑफ मूवीज, सो कार्टून के कुछ मूवीज आते हैं, कुछ एनिमेशन के मूवीज आते हैं, तो उसको इंग्लिश में देखो बच्चों के साथ अगर देखना है तो, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट गुड knowledge also, and simultaneously you can work on your communications also. तो जैसे कुछ रामायणा, महाभारता, कृष्णा, देन अपने हनुमान जी, इनके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में हैं। देन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के ऊपर भी है, जैसे वो बीच में लायन का एक आया था मूवी। ऐसे बहुत सारे मूवीज है जो आप देख सकते हो, एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है एंड हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसका इंग्लिश वर्जन देखो। ऑडियो बुक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी जैसे लेडीज को घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो जब चपाती बना रहे हैं या किचन में बहुत देर है, या फिर प्लेट्स क्लीन कर रहे हैं, जो भी है, मतलब जो भी घर के काम है जिसमें बहुत कुछ मेंटली कुछ नहीं करना है, बस फिजिकली चलना है, और उतना टाइम तो वो काम लेने ही वाला है, तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव योर फोन एंड ईयरफोन, एंड देन आप उसके ऊपर आप अलग अलग चाहे तो आपको गाने अच्छे लगते हैं तो गाने सुनो, या फिर ऑडियो बुक सुनो, या तो फिर कोई शोज सुनो। ऐसे जैसे रेडियो कैसे होता है ना, हर चीज वो डिटेल में बताते हैं क्योंकि वो ऑडियो में ही सुनते हैं सब। तो उस टाइप के शोज जो ऑडियो में ज्यादा, मतलब जो ऑफलाइन शोज है या फिर जो इस पे जा रहे हैं ना, उसमें ऑडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि वो चल रहा है वहां पे सब कुछ लाइव। बट जो सिर्फ ऑडियो के लिए बनाए गए हुए शो है ना, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस हमें देख नहीं सकते, हमें सिर्फ सुन सकती है, तो वो फिर बातें जब करते हैं तो उसको बहुत डिटेल में, जैसे अगर आप कमेंट्री सुनोगे, जो रेडियो पे कमेंट्री आती है, तो बिल्कुल वो डिटेल में बताते हैं कि इनके हाथ में अभी बल्ला है, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर बल्ला बॉल उधर गया, फिर ये हुआ, ये चक्का लगा, ये चौका लगा, ये हुआ मतलब वो इतना डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने ही हो रहा है। मतलब वो पूरा पिक्चर क्रिएट करते हैं उस टाइप का।
तो वैसे वाले शोज सुनो जहां पे आपको पूरा आइडिया आ जाए, बिकॉज अपना जो ब्रेन है उसका जो डिक्शनरी है वो पिक्चर के फॉर्मेट में है, एंड उसको लेटर्स नहीं दिखते। इफ आई से एप्पल, तो उसको APPLE नहीं दिखता है, एप्पल का पिक्चर दिखता है। तो मतलब एप्पल आपको ऑफ कोर्स फ्रूट एप्पल दिख सकता है, या एप्पल का फोन या एप्पल का लैपटॉप भी दिख सकता है जिनको वो चाहिए, बट द थिंग इज ये पिक्चर में दिखता है, मतलब इमेजिनेशन जो भी होता है वो पिक्चर फॉर्मेट में होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको विजुअलाइज भी करना है, इमेजिन भी करना है जो आप सुन रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। तो अभी क्योंकि लास्ट 1 मिनट बाकी है, तो वी विल टेक Q&A। ये भी नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगा, बट कल मैं देखती हूँ, वैसे मंडे टू थर्सडे ही है अपने ये वाले सेशंस। रिकॉर्डिंग में थोड़ा ऑफ कर